we had been discussed? Can anyone let me know what could be the last topic we had been discussed with? Facebook ad. So Facebook ads also, and also we have been seen with the how to create with the chatbot for the Facebook, that is through chatfuel.com. And also we have been started with Google My Business, how we can be able to create a business information profile through the Google search engine by using the Google My Business account. So we have been created that also. So is there anyone who tried it and we were able to create an account? Please put it as yes on the chat box. So if anyone has tried, please put it as yes of Google My Business. Yes, good. Fine. So the intention of creating the Google My Business, it was to have your business information to the nearby business people or to the audience. So either it is for B2B or for B2C, you can be able to get connected to them. Yes. So this is how the dashboard of your Google My Business, it will be shown. So I'll repeat it once again. How did we log into this account? So we went to the google.com, and if you have been logged in with your same mail ID through which you have been created with your Google My Business. आपने Google My Business अकाउंट को किस अकाउंट से आपने क्रिएट किया हुआ है, वही जीमेल अकाउंट से आपने google.com पे लॉग इन किया हुआ है, तो आपके ब्राउजर में यहाँ पर राइट साइड पे गूगल एप्स के ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफाइल के नाम से एक आइकॉन रहेगा, उस पे क्लिक कीजिए। सपोज आपको ये आइकॉन आपको नहीं दिखा दे रहा है तो उस ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन किया हुआ है, वो लॉगिन आईडी से कोई भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो आपको इस टाइम पे आपको गूगल माई बिजनेस के नाम से लॉगिन करके आपको इस स्क्रीन पे जाके आपको मैनेज नाउ में जाके आपको क्रिएट करना पड़ता है। So you have to create it in case if the Google My Business account, if it has not been created, you can be able to create it. So the very important part of this Google My Business is reaching to your local audience, to your nearby audience. So you can be able to feed it up with all your business information over here in the info screen. So whatever the information you are going to feed it up while creating the account, that information it is going to show over here. So in case if you are already having any website address, so you can be able to link that website address while creating the account itself. जब आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करने के टाइम पे आपको एक स्क्रीन मिलेगा जिसमें डू यू वांट टू लिंक विथ योर करंट वेबसाइट, सो डू यू हैव अ करंट वेबसाइट, उस पर क्लिक करके आपको आपकी वेबसाइट डिटेल्स आप दिया तो वो वेबसाइट आपको यहाँ पे लिंक हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव अ वेबसाइट, then this is the way how you can be able to create your own website for your business information to be entered. Okay, so the next thing after the info, after feeding up all the necessary information, then make sure that if your business details
is being entered genuinely, it is a real-time business it's running, and that real-time business details you have been entered here, then you can verify the business. Either while creating the account itself, you will be allowed to verify. In case if not verified, so certain times we may not verify it immediately because we might have entered half the information. We might have not completed the profile. So that would be the reason. आप जब भी आप अकाउंट खोलेंगे, बिजनेस अकाउंट, वहां पे आपका पूरा डिटेल्स देने के बाद ही वेरीफाई करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे. तो in case if you are not being verified, you can go to the home of the dashboard and you have an option over here as verification needed. यहाँ पे आप यहाँ verify now पे क्लिक करके आपका डिटेल्स देके नेक्स्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, just take it as Bangalore. And here you can be able to give your detail. So if this confirmation is clear, the information whatever it has been entered, it is a right, clear, then you can be able to take a call, or the text you will be receiving for that number. You can enter that code. So that code, it will be in the form of a letter, or it could be numerical. So you can be able to take that in the code number and you can be able to enter and you can verify it. So in case if you don't want to verify it immediately, then click on more options, other options, and click on verify later. And suppose if you are being given with that you have a physical location, then the department, Google, the particular team, it is going to send you the letter to your verified address over there, so that it will be reached out within 12 to 14 days of working days. So in that there will be a code number, you have to enter the same. So it is the same process of verifying it. So once it is verified, you can be able to get all this information on live. So it is visible to the people as soon as they are going to enter with any information related to any of this keyword. So it is going to show your business details to the audience. Okay. So make sure that on regular basis, you're going to enter the post. You're going to enter the post, either it is a general related to the business, or it is going to be an event or an offer post, any such kind of information you have to keep on activate. You should be keep on doing some activities. Then make sure that you are going to take care of your reviews, what you are going to receive, you are going to respond to it. It is mandatory, even though it is a negative, you have to, then you have to check it out insights. So it gives us statistics that how many people are aware about your website, how many are visiting directly to your website or indirectly to your website by using the browsers, or you can be able to check it out from which part of the globe the people are coming, what time they are coming, किस टाइम पे किस तरह का लोग और किस एज का लोग, what is the peak time of your audience are visiting to your website, and it all depends upon the products and services what you are going to provide with. So you can be able to make a statistical data and you can be able to create the ads
as per that requirement. Okay. So the next thing is try to upload the products and services information. Do not worry in case of products is not there and only services is there, or only products is there, only service and services is not there. It all depends upon the category what you are going to choose with. Okay. So once it has been chosen, you can be able to change it at any point of time. You can add the details. The next thing is, if you in case if you want to give an access to any of your people who has to feed up your information, in that case you can be able to create an users on behalf of you. If anyone has to take in charge of this page and they have to do the work, आपके बदले में कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस करके आपका जो कुछ भी डिटेल्स है उसको अपडेट करना चाहिए, उन लोगों को आप एक्सेस देना चाहेंगे तो यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करके ऐड यूजर्स पे जाके वो डिटेल्स आप दे सकते हैं, उनका ईमेल आईडी एंड देयर रोल. So you can be able to decide it and you can be able to provide the authority. So the next thing is, if you want to create multiple business accounts, that is for example आपके पास और कोई दूसरा बिजनेस रहेंगे और उनका भी आप सेपरेटली एक पेज को क्रिएट करके उसको भी आप गूगल सर्च इंजन में आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे तो आप एक नया पेज को क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं by clicking on add new business. The same way how did you create for this business, same way you can be able to create another new business. Either it could be a branch or it could be a franchisee or it could be another type of business of your business. So you can be able to have one login with multiple business accounts, and once it is created, how do you switch over to each business page? So यहाँ पे आपको businesses के ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जाके आप लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस पेज को देख सकते हैं और कौन सा बिजनेस पेज पे आपको एक्टिविटीज करना चाहेंगे उस बिजनेस के नाम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. So by clicking on businesses option, you'll be there in the screen. Suppose if you are not interested to continue with that business page, particular business page, you might have been entered with and demo information or fake information. It could be any reason. And if you want to remove that page, how do you remove? Because most of the people while learning, they will be trying to enter with some basic details or the details which are not real. So वो details यहाँ पे enter करके try करना चाहेंगे, ऐसा रहेगा तो you can be able to remove this page. So how do we remove it? By clicking on businesses. So you'll be there in the screen. You can select that business name which you want to get removed, and you can be able to see an option as actions, और यहाँ पे last का option है remove business, which you can be able to remove it. Suppose if your business was there and you do not want to say that there is no business existing, if you remove it, it is completely removed from the Google search. But if you want to keep it, but it is not going to be active, in that case, you can be able to choose any of this option which are relevant to it. Okay, so you can be able to do the necessary actions if required. So like this, you can be able to create the pages and you can be able to do the activities. So is that everyone are clear till here? So type it as yes.
or in case if you have any question, you can raise it up. Okay. Fine. So let us move to the next topic. So you can put it your questions later in case if you are finding it something missing, you can be able to add it later. So here we have an option in the same page. So I can go here and I can be able to run an advertisement on this business. So how do I run it? So you have it on the left hand side as an option called create an ad. You can create an advertisement from this page itself, or you can be able to go to a website where you can be able to create the ads. So the website address is ads.google.com. So there's the dashboard screen, it appears. So let me put this into the chat box in case if anyone has missed out. Yeah. So ads.google.com. You can be able to click on sign in option or get started. For the first time users, click on get started. Sir, can you repeat because the screen was lost for some time? How is that? Okay. From create an ad. Yeah. So as of now, I didn't create the ad. So, but still I'll be just going back to that screen from where do we create the ads. So at least now the screen is visible, ma'am. Yes, it is visible, but it is minimized in size. Okay. So now you have to go to the website called ads.google.com, which I've already put it in the chat. You can be able to use that link itself. So I can show it on the screen itself by going to the chat box. I'm clicking on the link which I've shared. So it is getting open with that screen. So if you're trying, you can be able to use that link, which I've already shared on the Zoom's chat box. Okay. So this is the first screen which it is going to appear, ads.google.com. यहाँ पे आप get started पे क्लिक कीजिए. पहली बार आप ads शुरू कर रहा है तो get started के बाद में एक नया सा स्क्रीन ओपन हो जाएगा. And here you can be able to see on the right hand side there is an account number create किया हुआ है जो 10 digits रहेगा. So can you all see on the right hand side there is a 10 digits account number. Below to that there is your email ID account also. Okay, so you should make a note of this number. So because you can be able to create n number of account IDs and there are different types of ads we can be able to create it. So you should be able to know that. So which ad account has a which type of an ad. So anyway, you can be able to check it out, but making a note, it would help you out to easily identify that which ad has been created on which type of account number. Okay, so now in this case, after creating an account, so for you people, it may ask you to log in with your Gmail ID account at the first time, or if you are logged in to the browser with your
Gmail ID account which you wanted to use it for ads also. So the same automatically it is going to get open with this screen. यहाँ पे आपको पूछ रहा है what is your advertising goal. So I think you might have seen the same kind of options while creating an ad when we were creating for the Facebook. Okay, so it is similar to it. So wherever you create the ads on the digital platform, it is almost of the features you are going to get it the same. So here also it is asking what is your goal. Excuse me, sir. I think the screen is stuck. Is this the same? Can you please unshare and share again? I'm sorry. I think the screen is frozen. Yeah, Can't see anything. Yeah. So is that everyone are finding it difficulty that the screen is not visible? The screen is visible, but it's stuck at what's your main advertising goal. Yeah, after get started, uske baad screen is stuck and we cannot see any changes. If So you're not able to see any new screen option after get started. New campaign screen is No, visible. sir. It would be better if you unshare and share again the screen. I'll do that. I'll do that once again. Okay. Is that now or is it visible, ma'am? This is the same screen. So are you clicking anything on that? No, Because as we of can now, see are you able to see the options like get more calls, get more website this. sales? Yes, We are there in the Yes, same yes. screen. We are there in the same screen. Okay. Yeah. yes. All right. Okay. Yeah. Fine. So we are there in the first screen of the Google Ads screen. So where we have to choose it, what kind of a goal we want to reach it. So if I'm running an advertisement, what should I get back? So is that I should receive a more calls from the audience, or should I get more people getting logged into my website and get leads generation? Or do I want the people to visit my physical store location, or do I want to get more views for my video branch and have an engagement through the YouTube channel? So what is your intention of creating this ad? So apart from this 4 types of goals, we have many other options. So if I scroll down the screen, so are you able to see an option called switch to expert mode? Yes, sir. Yeah. So you can be able to click on this option. Suppose while creating this screen, the Google accounts ID, if this option is not available, after scrolling down the screen, below the next option, are you a professional marketer? Switch to expert mode. This option, 90% it will be there. So other 10% might be your internet is not working fine, or the Google server, ads server might be a little bit slow on your place. So there could be any reason. In such instances, you may not get this option. You may not. But don't worry about that. If you don't get that option, you can be able to go to, on the right hand side, you can be able to see your profile name. So click on your profile name and you can be able to see where you can be able to create a new account. So it will allow you to create a new account. So once you create that new account, you can be able to get the same screen, and if you scroll down, you will be able to get this switch to expert mode. It could be because of the internet glitch. So you can be able to solve it in that way. So in that case, there will be new ads account ID, it is going to get opened. Okay, so now
Let us go to the option switch to expert mode. So after clicking into this, we'll be into the new screen. So here it is asking us to do the instant ad. So until and unless you are going to एक do सेकंड this process. Yes, sir. सर, मेरे को एक्सपर्ट मोड नहीं आ रहा है। मैं मतलब 2-3 बार हाँ। कोशिश किया। So that's what. अभी यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे गूगल अकाउंट करके ऑप्शन दिखा रहा है आपके ईमेल आईडी के नाम के साथ। हाँ जी। उस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऐड अकाउंट आपको आपका जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, एक ही अकाउंट है या एक से ज्यादा है सर? एक ही है। तो यहाँ पे आपके उस ऐड अकाउंट के बाजू में सेटअप इन प्रोग्रेस करके आ रहा है। नहीं, ऑलरेडी सेटेड है। सेट है ऑलरेडी, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है सर, हाँ, ऐसे आपके ईमेल आईडी के नीचे आपको गूगल एड्स अकाउंट करके दिखा रहा है ना जी, और उसके नीचे नंबर भी दिखा रहा है और उसके बाजू में सेटअप इन प्रोग्रेस के कोई भी लिखा हुआ है? कुछ भी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। नहीं आ रहा है, सेटअप इन प्रोग्रेस नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को आप पहले से ही एक कोई एड्स ट्राई किया हुआ है तो क्या सर? हाँ। तो आप यहाँ पे जहां पे आपको गूगल एड्स करके एक जो सिंबल है ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे क्लिक कर लिया तो आपको कहां पे लेके जा रहा है आप मेरे को बताइए। कहीं नहीं ले जा रहा है, वही स्क्रीन पे रुक रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे न्यू अकाउंट करके ऑप्शन कोई आ रहा है आपको? उस एड्स अकाउंट के नीचे और ऊपर देख लीजिए, वहां पे न्यू अकाउंट करके हाँ, क्रिएट न्यू एड अकाउंट आ रहा है। हाँ, वहां पे क्लिक कीजिए। अच्छा, नया बना दूं? हाँ, किया। हाँ, आपको ऐसे स्क्रीन आ रहा है सर जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा दे रहा है? नहीं, न्यू गूगल लेट्स गेट स्टार्टेड, सेटअप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग अकाउंट। ये तो ऐड, नया ऐड और यहाँ पे पूरा नीचे आई है और वहां पे देख लीजिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ, उस पे क्लिक कीजिए। कर दिया, राइट, कर दिया। फाइन। हाँ, सो अभी आप थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। So this is sometimes it will go and ask for you to do it instant add account. तो आपको इमीडिएटली आपको एड अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शंस दिखाई देगा। तो आपको पहले पूरा अकाउंट को कंप्लीटली सेटअप करने के बाद ही आपको यहाँ पे एड्स को शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे जब आप इंस्टेंट अकाउंट को शुरू करेंगे। Okay, so when you are not sure that where you are there, so it is better you can go and create a new account. Okay, so you can delete the existing account and create a new account until and unless if you are not been started any kind of ads. आपने अब तक कोई भी ad शुरू नहीं किया हुआ तो don't worry about the options, whatever the screen you are there. If you feel it is not the right options, just delete it and create a new ad account. जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा दे रहा है, new Google Ads account. So you can start with this.
ओके, सो जैसा मेरे को दिखा दे रहा है वैसा ही आप लोगों को भी दिखा देगा। सो कभी कभी दूसरे दूसरे ऑप्शंस को आप दिखाई देगा। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्विच टू एक्सपर्ट मोड and make sure that next screen it is going to be filled up with the multiple objectives or the goals of an advertisement. सर क्या आपको ऐसे ही स्क्रीन दिखाई दे रहा है या और कोई दूसरा ऑप्शन है सेल्स लीड्स वेबसाइट के नाम से आफ्टर क्लिकिंग स्विच टू एक्सपर्ट मोड? यस सर, मेरे को वही आ रहा है जो आप बोल रहे हो, सेल्स लीड्स वेबसाइट ट्रैफिक एंड ऑल। हाँ हाँ, सो वही स्क्रीन आपको आना चाहिए। I'll just try to bring it that. Okay, just give me a minute. Let me check it out with this option. Kindly give me a minute. So it will take some time to get connected with the proper options. Yeah. So hope you're getting the same screen, sir. यस परफेक्ट सर। Yes, sir. Fine. So आप लोगों को भी ऐसे ही आपको options आना चाहिए. This is the objectives. What is the intention of creating the ads? So you have to refresh the screens. You have to create the new accounts and do not keep with your old accounts which are not
been used. So for example, I have this, so I have to delete this account. Okay, so I can help you out how to delete it later also, but make sure that you are going to start with your campaign with the right options. Okay, so now we are there in the right options, but here you are having a challenge that what is that you want to create it, what kind of ads to be created through the Google. So यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, what is your goal, what you wanted after your ad. So what is that return do you expected? Is that do you expected the sales to happen after your ads? Do you expect to collect the leads of your audiences who are visiting your ads? Do you want the people to get diverted to your website? There should be your website traffic. आपको आपके वेबसाइट को चेक करने के लिए आप डाइवर्ट करना चाहेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के तरफ से आपके वेबसाइट की तरफ, या आप कोई भी आपका प्रोडक्ट या ब्रांड का एक्सपोज करने के लिए आप कोई भी वीडियो के द्वारा आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो आप सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे, या आपको लोगों की रीच होना चाहिए, सिर्फ यू वांट टू गेट इट मोर traffic towards your brand. So you are not interested with the sales. In that case, you can choose it with brand awareness and reach. Then if you are having an app, you can be able to start to promote the app. Then आपका local store visits and promotions through Google My Business. Google My Business page को आप promote करना चाहेंगे तो you can be able to choose it with this options. Totally 7 type of goals are being provided over here. So you can choose it, any one of it, and you can be able to run it. But लीड से जाएं सर. yes, sir, go ahead. अच्छा, आगे नो प्रॉब्लम. नहीं, मुझे लगा आपने पूछा, उसके लिए मैंने बोला लीड से करते हैं. Okay, so you can be able to see that whenever you go to each and every type of objective, suppose if I choose it with sales, so I will be allowed with multiple types of ad. I can be able to create it. So ad type is nothing but campaign type. यहाँ पे campaign type का options यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So what is the search? Search network के through आपके ads को create करना चाहेंगे तो आप इसको select कर सकते हैं, और इस search का option आप जो select कर रहा है वो आपकी sales के through, यानी आप एक सर्च एड क्रिएट कर लिया तो सिर्फ आप सेल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके रिलेवेंट का ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिखाई देता है. ओके, सो आइदर यू कैन चूज विद द सर्च नेटवर्क एड. हाउ डू द सर्च नेटवर्क एड लुक्स लाइक? सो आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. So you can be able to choose it. So you can be able to see the ads which are running on the search engine. यहाँ पे जो कुछ भी आपको रिजल्ट्स दिखा दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है. So the ads which are showing over here, so this kind of ads are considered as the Google search network ad. सर्च इंजन के रिजल्ट्स में आपको टेक्स्ट के थ्रू जो एड्स दिखाई दे रहा है वो सर्च एड. So you can be able to create an ad like this. You can create it of your own. Then
there is another type of ad which is called as display ads. So for example, so you can be able to see in some other websites, we can be able to see the pop-up ads. So you can see these are called as a banner ads. Okay, so display network ads means creating the banner ads. So creating the ads on some other Google related websites. Okay, it is someone else's websites, but your ads will be running over there. So this type of ads, we call it as display network ads. Okay, so the next type is shopping ads. So if you search for anything through Google and you are going to get it. Example, buy t-shirts online. So you can see the ads with the images. This we call it as a product listing ads, or also we call it as a shopping ads. यहाँ पे आपको with image आपको link ads जो दिखाई दे रहा है, you can see the ads with the picture. These are all called as a shopping ads or product listing ads. So which you can be able to create it through the Google ad screen only. Then another type of ad is how to create an ad on the YouTube videos. So everyone have been experienced that while watching a video on the YouTube, so the video will start once after completing your advertisement. So you can be able to see the ads with skippable ads and non-skippable. So that means after 5 seconds, you can be able to see the ad. It is going to show it as a skip ad option. You can be able to skip it. And there are certain ads which will not be get skipped. So those are all unskippable ads. So you can create the ads in all these formats. Is that clear to everyone? So type it as clear, or if you have a question, you can raise it. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. So this kind of ads we can be able to create it from this screens. So now if I want to create it, so I can be able to choose whatever the goals I want to reach it. Suppose if I want to reach the multiple goals in one ad, so I should be able to know that which is that type of campaign can be helpful to me to reach it multiple type of goals. So you can just observe. I'll just show you the list of types of campaigns are available. So you can just click on sales and you can check it out. How many type of campaign are available for sales? Can anyone tell me for me? So how many campaign types are available 6. for sales? So you can just have a look on each and every options of 6 types of ads also. There is search, performance facts, display, discovery, shopping, and video. And also you should observe that the shopping and video ad is not activated. I'll let you know how to activate also. So these are the 6 types of options when I choose with sales. So can you just have a look when I choose it with leads? अभी leads के ऊपर क्लिक किया, क्या आपको वही options दिखाई दे रहे हैं या कोई changes है इसमें? Sir, how to select all the 6 together? No, you cannot select all the types of ads at one shot. It is only you have to choose it any particular type of. Okay. So my explanation was
when I want to choose multiple goals. So you cannot select multiple campaign type, you can select multiple goals. Okay, so you can be able to see in the leads compared to the sales, do we find any difference in the options? Is it same or any kind of difference you find? So there also it was 6, here also it is 6. But is it all the options are same? I think shopping is different one, or the discovery. I'll just click back once again to the sales. So do we find it same or difference? They're the same. Yeah. So I'll take you to the website traffic. Can you find it? Is there any difference? Same. Same options, yes. So that means the campaign types which are used to get the sales, to get the leads, and to get the website traffic, all are same. So let me take you to the next one, product and brand consideration. So can you see how many type of campaigns are there? One. Only It one. is only one. So that means if you are going to create a video ad only, then only you can be able to reach this goal, product and brand consideration. So the brand and awareness, it is only two types, either display or video. So app promotion, it is only through app. Local store, it is related to the local, that is Google My Business and Performance Max. So these are the two types of campaigns I can be able to use it. So if I want to have the sales, leads, as well as website traffic, I can be able to choose it any one type of campaign, which will help me out to get the sales, to get the leads, and to get the website traffic. So instead of clicking any particular goal, किसी एक गोल के ऊपर क्लिक करने के बदले में you can choose, there is an option called create a campaign without a goals guidance. So if you click on this, it will list out all the type of campaigns and you can be able to choose that particular campaign type, which will help you to have more than one goal. Okay, if I choose it with search ad option, so it will help me to create multiple ads. That is, multiple goals can be reached. So I can be able to reach it with the sales, I can be able to reach it with leads, and I can be able to reach it with the website traffic also. So to get all the types of goals involved, see, the options are different. When I choose only sales, the options are going to be different. When I choose the leads, it will be different. When I choose website traffic, it will be different. Instead of that, if I go and create it with a campaign without a goals guidance, when I'm not very specific that I want only this. So when you are going to choose this option, and if you create the ad of that particular campaign type, it will consider all the options which are available on sales, leads, website traffic. So hope everyone have been understood. So which type of objective to be selected? So which is the recommended option to be selected? सर अगर हमें मतलब एक स्पेसिफिक लीड्स ही चाहिए तो सिर्फ हाँ, लीड्स का ही करना चाहिए या फिर गोल्स गाइडेंस के बिना आगे बढ़ना चाहिए? So that's what you can be. See, you can be able to choose only the leads, means leads, no problem. But if you wanted, either it could be only leads, or it could be sales, or it could be आपके website visitors ज्यादा बढ़ने के लिए, तीनों को भी आपको मिलाना चाहिए, तो
आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. समझ गया, थैंक यू. Okay, you're welcome. So you can be able to choose an option as create a campaign without a goals guidance. Okay, so you can be able to see here out of 9 options, you can see the 6 type of campaigns are allowed to create it, but other 2, I'm sorry, it was 7. So 7 type of campaigns are allowed to create it, but you are not allowed to create the shopping and the local. Okay, so to make this active, so what we are supposed to do it is, and there are certain options also in the particular campaign types when you're creating, it may be not activated because you are now, you have created only account, आपने account को create किया है, वो complete नहीं किया है, वो प्रोफाइल क्रिएशंस आपने कंप्लीट नहीं किया है. उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां पे गोल्स लिखा हुआ है, सेल्स लीड्स, ब्रांड अवेयरनेस, उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन. तो पहले आप पूरा अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हैं. क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है सर? जिसको भी ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है. यस सर, मिल रहा है. मैं उसमें लीड्स में आगे भी गया तो उसमें वेबसाइट में मेरे को कुछ ब्लॉग्स ऐड करने को बोल रहे हैं. हाँ सर, तो आप दोबारा से बैक स्पेस लीजिए, यानी प्रीवियस स्क्रीन पे आइए और यहाँ पे इस स्क्रीन पे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन. मैं समझ गया सर, बट ये कैसे ऐड कर सकते हैं, ये जो ब्लॉग बोल रहे हैं वो? नहीं, आपका कोई भी ब्लॉग्स या आपका वेबसाइट रहेगा तो उसका लिंक वहां पे पूछ रहा है, आपको उस लिंक को देना पड़ेगा सर. नहीं, लिंक नहीं सर, ये कोड्स दे रहे हैं कि ये कोड अपने को अपनी वेबसाइट के हर एक पेज पे पेस्ट करने हैं. क्या आपको वहां पे गूगल टैग्स करके आ रहा है क्या सर? नहीं, अपने इसी पेज में आप नीचे जाएंगे ना. अच्छा, आप आगे आ गए. लीड्स हाँ, में जब हम नीचे जाते हैं ना तभी ओके, आता है सर. ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से उस स्क्रीन पे आ देता हूँ. सो एवरीवन प्लीज गो टू द क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका इंडिया टाइम जोन और करेंसी या ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है. यू कैन क्लिक ऑन सबमिट. ये सभी आप क्लियर कर लीजिए विद प्रॉपर डिटेल्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ पे एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक कीजिए. So it will directly take you to the dashboard of your Google Ads. और यहाँ से आपको रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, आप यहाँ पे रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. और यहाँ पे दोबारा से आपको एड्स शुरू करना चाहिए तो जहां पे भी आपको न्यू कैंपेन विद अ प्लस मार्क सिंबल दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको दोबारा से वही ऑप्शंस आपको दिखाई देगा और सभी ऑप्शंस को एक्टिवेट रखेंगे. ओके, सो आप दोबारा से ये स्क्रीन पे आएंगे. सो आप यहाँ पे लीड्स के ऑप्शन पे ऊपर गया है ना सर? हेलो सर. यस सर, मैं लीड्स में गया. हाँ, लीड्स में जाने के बाद में कौन सा कैंपेन टाइप पे क्लिक किया? नीचे और आएगा ये सर्च में. सर्च में, ठीक है. हाँ, यहाँ पे वेबसाइट डाला मैंने और लीड्स फ्रॉम सबमिशन ओके, लीड फॉर्म सबमिशंस, और वेबसाइट विजिट. ठीक है. सो यहाँ पे आपका वेबसाइट एड्रेस देना पड़ता है. हाँ, वो डाल दिया मैंने. ओके,
और यहाँ पे कैंपेन नेम आपका लीड्स और सर्च के नहीं ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर, मेरे को और जो आ उसके रहा है ना, नीचे और उसके नीचे जो स्टार्ट ट्रैकिंग योर लीड्स एज अ वेबसाइट कन्वर्शन, उस पे क्लिक किया था क्या सर आप? your conversion action has been created for your account website lead. हाँ, यही है ना? हाँ, यस 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 यस। हाँ सर, ये तो आपके कन्वर्शन ट्रैकिंग, आपके लीड फॉर्म्स को जो कुछ भी आप क्रिएट किया हुआ है उसमें आपको ये कोड को ऐड करना चाहिए करके बोल रहा है। क्या आप यही? बट हर एक ऐड पे करना होगा? नहीं, ये तो आप यहाँ पे, हाँ, जब भी आप लीड्स को जनरेट करने जाएंगे ना, और लीड फॉर्म्स जो आप लिंक करने जा रहा है, उस लीड फॉर्म के बैकएंड पे आपको ये कोड को ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेटर ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस पे जाइए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस पे जाइए, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप, इसमें से सर्च पे जाइए। तो मैं उसमें से बाहर निकल जाऊं? तो थोड़ा आप ऊपर गए तो वहां पे आपको दिखाई देगा। यस यस यस, समझ गया मैं। सो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस पे क्लिक कीजिए, और उसके बट बाद में इसमें से लीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना इसमें फिर? नहीं, लीड्स का ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको मिल रहा है ना। गॉट इट सर, बट मुझे लीड चाहिए। अगर मेरे कैंपेन से कोई आ रहा है तो मुझे उसमें से, जैसे फेसबुक लीड डाउनलोड होते हैं एक्सेल में, वैसे ही इससे मेरे को लीड चाहिए। हाँ सर, आपको लीड्स को कनेक्ट करने के लिए आपको लीड फॉर्म को कनेक्ट करना चाहिए ना। हाँ हाँ, आप यहाँ पे भी आपको लीड्स को ऐड कर सकते हैं, यानी आप लीड फॉर्म्स को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर? कौन हाँ, से वही ऑप्शन आगे से? आगे हम देख लेंगे सर। ठीक है, सर्च पे क्लिक कर लिया। हाँ, सर्च पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है, आपको वेबसाइट विजिट, यानी आपके वेबसाइट विजिट को ज्यादा Yes. बढ़ाने के लिए आपका लिंक आपको देना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी Right. आप डिटेल्स देंगे, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां पे हाईलाइट हो जाएगा Got it. आपके एड्स में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कैंपेन नेम में, यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरे को कोई नेम नहीं पूछ रहा है। वहां पे सर्च 1 करके लिखा हुआ है, उसको निकाल के आप लिख सकते हैं। नहीं सर, वो भी ऑप्शन थोड़ा नहीं आ रहा नीचे है। आइए, थोड़ा नीचे आइए। हाँ 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 हाँ, एकदम नीचे आ गया, वो भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। कैंपेन नेम करके कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्या सर? नहीं, वो पहले मतलब न्यू कैंपेन के नाम से शुरू हो गया होगा। मेरे को टाइटल में दिख रहा है न्यू कैंपेन। ठीक है, और यहाँ पे और ये सारे ऑप्शन भी नहीं आ रहे सर मुझे। जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, सर्च, रिपोर्ट्स, टूल्स एंड सेटिंग्स, हेल्प, नोटिफिकेशन, वो सब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड सर। आप आपका स्क्रीन को शेयर कीजिए सर। एक सेकंड कर देता हूँ। देखिए सर, मैं यहाँ गया, दिख रहा है सर स्क्रीन? हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट। हाँ, ओके। अभी वहां पे मेरे को एक्सेस दे सकते हैं आपका? एक मिनट सर, यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस दिखा रहा है ना। हाँ, वहां पे ब्रांड अवेयरनेस देख रहे हैं आप?
हाँ उसके नीचे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर सबमिट Okay. कीजिए। okay. अभी एक्सप्लोर योर अकाउंट पे जाइए। Oh, got it. अभी यहाँ पे न्यू अभी new कैंपेन पे campaign. क्लिक, हाँ सर। Okay, अभी यहाँ got पे it, क्रिएट got it. कैंपेन, यहाँ पे सर्च। तो ये लीड, ये वाला ऑप्शन वापस आए। क्लोज कीजिए, क्लोज। एक मिनट, थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ आप थोड़ा ऊपर, एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके देखिए सर। आप, हाँ, सर्च पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ, अभी दिखाया जा रहा है ना। तो ये वाला क्या है सर? कन्वर्जन गोल्स लिमिटेड। तो वो पिछला जो भी आपने वेबसाइट एड्रेस दिया होगा ना, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे कैंपेन नेम पे चेंज कीजिए। फॉर एग्जांपल जून कैंपेन। अभी कंटिन्यू कर दूं? हाँ, कंटिन्यू कीजिए। अभी गेट स्टार्टेड। हाँ, तो यहाँ पे आपको बिडिंग स्ट्रैटेजिस्ट से पूछ रहा है। तो कौन सा टाइप का बिडिंग स्ट्रैटेजिस्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए, आपके किस तरह का चार्जेस आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप अभी 1000 रुपीज आप डाल रहा है, तो वो 1000 रुपीज आपके तरफ से कैसे चार्जेस ले सकते हैं, किसके ऊपर आपको चार्जेस लगाना चाहिए। सो इसके लिए बिडिंग स्ट्रैटेजिस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं द ऑप्शंस आर कन्वर्शंस, कन्वर्शन वैल्यू, क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। सो अभी जो आप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, कन्वर्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्लिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा टाइप का ऑप्शंस आप यूज कर लिया तो अच्छा रहेगा। सिंस यू हैव बीन चोजन, अभी आपने लीड्स को सेलेक्ट किया हुआ है। सो आपका मेन इंटेंशन है आपको लीड्स को जनरेट करने के लिए, और इसके ऊपर आपको चार्जेस लगाना चाहिए। तो आपको कन्वर्शंस के ऊपर, यानी जितना भी कन्वर्शंस होता है उसके कन्वर्शंस के बाद में ही आपको चार्जेस पड़ेगा। ओके ओके, सो जनरली सर्च एड्स क्रिएट कर लिया तो आपको ऑप्शंस 5 टाइप्स का होता है। एक CPC, कॉस्ट पर क्लिक, यानी क्लिक्स के ऊपर। सो एक क्लिक करने के बाद में ही आपको चार्जेस लगाना है, तो क्लिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी 1000 टाइम्स आपके एड्स को सर्च इंजन के ऊपर डिस्प्ले करने के बाद में ही आपको चार्जेस लगाना चाहिए। ऐसा रहेगा तो CPM को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंप्रेशन शेयर। आप वहां पे वो कन्वर्शंस के ऊपर क्लिक कर लिया तो आपके लिस्ट में वो दिखाई देगा, देखिए लास्ट ऑप्शन। सो क्लिक्स, हाँ, सो 1000 टाइम्स आपके एड्स गूगल सर्च इंजन में दिखाई देगा, तो उसके बाद में ही आपको चार्जेस लगेगा। और तीसरा टाइप का ऑप्शन है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अभी जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है कन्वर्शंस या कन्वर्शन वैल्यू, यानी जितना भी आपको कन्वर्शंस होगा आपके क्वांटिटी,
एक सेल हो गया तो उसके ऊपर आपको चार्जेस लगता है। ऐसा करना है तो आप कन्वर्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही कन्वर्शंस होना चाहिए, ऐसा आप देना चाहेंगे तो कन्वर्शन वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको किस तरह का बिडिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंस आपने कन्वर्शंस की ऑप्शंस को सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे कन्वर्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो द रिकमेंडेड अदर ऑप्शन इज क्लिक्स। क्लिक कीजिए। तो अभी कन्वर्जन क्लिक पे करें। ओके, हाँ, पे कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यू आर चोजन टू फोकस ऑन क्लिक्स यूजिंग द मैक्सिमाइज क्लिक्स बेस्ट स्ट्रेटजी बट योर अकाउंट ट्रैक्स कन्वर्शन ट्रैकिंग, यानी आपने कन्वर्शन ट्रैकिंग को एक्टिवेट किया हुआ है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन इट्स नॉट रिकमेंडेड करके आपको दिखाई दे रहा है। तो बेटर आप वहां पे जा सकते हैं कन्वर्शंस पे, ठीक है ना सर? So you can Yes, be sir. able to, yes, so everyone can be able to select it with the particular type of bidding strategies which are applicable to your type of campaign and how you want to be get charged. So उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग सा types of bidding strategies को implement कर सकते हैं। The next thing is what type of ad you want to create it. Is it only the search network ad? जो कुछ भी आपको आपकी सर्च इंजन में जो टेक्स्ट टाइप ऑफ एड्स क्रिएट हुआ था ऐसे ही आपको चाहिए, नहीं तो डिस्प्ले नेटवर्क एड, पॉपअप एड्स, कोई दूसरे वेबसाइट में आपका एड्स दिखाई देना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए तो आप डिस्प्ले नेटवर्क एड्स को भी आप इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं सिर्फ आपको सर्च एड में ही क्रिएट करना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए तो यू कैन बी एबल टू अनलिंक, वहां पे जो डिस्प्ले नेटवर्क के नीचे जो टिक मार्क है उसको अनटिक कर लिया तो सिर्फ जो भी टिक किया हुआ है उसको ही आप यहाँ पे ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों चाहिए तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लोकेशन वाइज, क्या आप पूरा इंडिया को टारगेट करना चाहेंगे या स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना चाहिए? आपका एड्स जहां पे भी पूरा इंडिया कहीं पे भी लोग आपके कीवर्ड्स को यूज करके चेक करके देखेंगे तो आपका एड दिखाना चाहिए तो आप पूरा इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं पर्टिकुलर रीजन को सेलेक्ट करना चाहिए तो आप यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं किस किस रीजन पे आपको एड्स को रन करना चाहिए। क्या आप पूरा इंडिया को सेलेक्ट करना चाहेंगे सर? नहीं है 5G में क्या फर्क पड़ जाएगा? 5G या 6G क्या होता है? यस, लेकिन 4G हो या 5G, सो यहाँ पे आप लोकेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम अभी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन लिख देते हैं, एंटर अनदर लोकेशन करते हैं, पर if we want to modify it sometime later, You can do the modification. you can add it. Yeah. So the next thing is यहाँ पे लोकेशन के बाद में आप नीचे आए तो लैंग्वेजेस का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, so you can select it with that languages on which all the languages the people are using the Google search engine. So by default इंग्लिश लिया हुआ है, आप लिख सकते हैं वहां पे कौन कौन सा भाषा यूजर्स को
आप टारगेट करना चाहेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. Okay, the next thing is audience segments. Audience segments. Yeah. So यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टारगेट करके देख सकते हैं based on the detailed demographic यानी status of a person. So क्लिक कीजिए उस ऑप्शंस पे. आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज अभी जो आप ऐड देना चाहेंगे वो ऐड इस पर्टिकुलर कैटेगरी लोगों को ही सूट करता है. ऐसा रहेगा तो यू कैन बी एबल टू चूज दोज पीपल टू whom दिस एड इज फॉर. वही लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं. And make sure whatever the targets you are going to create it, are you sure that these are the peoples? So do not select it just randomly क्योंकि आप यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा इसलिए. It is not a free of cost. And you have little more options. इसके अलावा भी और भी options है. Yes, sir, select. हाँ, और उसके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट पे वहां पे जो who they are लिखा हुआ है ना ब्राउज के नीचे. हाँ, दो सेकेंड ऑप्शन है इंटरेस्ट एंड हैबिट्स यानी जिस कैटेगरी लोगों को आप टारगेट करना चाहेंगे जो गूगल सर्च इंजन सर चेक कर रहा इसका है. चालू है सर, प्लीज पीछे म्यूट कर दीजिए. यहाँ पे आप वो ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर लीजिए. Excuse me, sir. हाँ मैम. I think Mr. Ritesh is clicking very fast. So if you can show your screen. यहाँ पे ऑप्शंस जो कुछ भी आपको मिल रहा है यू कैन बी एबल टू गेट दैट लिस्ट. सो सर कैन यू क्लिक ऑन दैट व्हाट देयर इंटरेस्ट हैबिट्स. हाँ यहाँ पे. So you can be able to choose the target. I'll just explain these options. Detailed demographic means it is going to be depending on the people's status, either based on their parental status, education status, their income status, then employment status के categories रहेगा. Second option है affinity audiences. It all depends upon based on the people's activities on the search engine. कौन सा कैटेगरी का इंफॉर्मेशन वो लोग सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप ऐड दिखाना चाहेंगे. You can be able to choose it and do not choose it all the options. You have a sub options. You have to go to each and every options and check it out. Is that clear, ma'am? Yes, sir. Yeah. Good. So it is not that if it is not there in one category, it is not going to be there. It will be there on the different categories. That only the thing is you have to be patiently, you have to check it out. The next in-market audience. In-market audience are the people who are in search of the product which they want to buy it. That means they are all the decision makers who are very much keen on purchasing. So for them also you can be able to show your ads. But to which category of people do you want to choose it? So you can be able to choose it with the category.
Yes, if you are finding the relevant options, you can choose it. And last two options, you don't get that list. अभी आपको जो पहले तीन ऑप्शंस में जो लिस्ट मिले थे, वैसे फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन में नहीं मिलेगा. वो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शंस वही जो लोग पहले आपके कोई दूसरे ऐप्स पे जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, उन लोगों का लिस्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कैटेगरीज. सो आपको मिलेगा. उन लोगों को आप चाहे तो रीमार्केट कर सकते हैं. ओके, सो you have to choose it the type of audiences within this first three options. Okay, so the selected options, you can be able to see it on the right hand side. Then ये combined segment में कुछ आ रहा है कि new combined segment. So you can click on that new combined segment. So यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं और कौन कौन से सेगमेंट में यहाँ पे जो कुछ भी आपका सेलेक्ट किया हुआ है, उस सेगमेंट से आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल वेर यू कॉन कनेक्टेड. फॉर एग्जांपल बैंगलोर में गुजराती लोगों को ऐसे आप कंबाइन कर सकते हैं सर. So you can choose multiple options. क्लिक कर लिया था. Okay, got it. Okay, so like this. So once after you're finishing with your list of all the type of people, you can just scroll down, click on more settings, click on that. यहाँ पे आप दिखा देता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ योर कैंपेन. सो कब शुरू करना चाहिए, कब एंड करना चाहिए. सो आप यहाँ पे स्पेसिफिक डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. और मोर सेटिंग्स पे जाइए दोबारा, वहां पे व्हेन यू ऐड शेड्यूल करके दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. ऐड शेड्यूल, द नेक्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे आप कौन से दिन कौन से टाइम पे आप रन करना चाहेंगे, आप यहाँ पे वो दे सकते हैं. नहीं तो आप ऑल डेज को भी रख सकते हैं, ऑल द टाइम. ओके, तो नेक्स्ट कीजिए सर. So hope everyone were able to understand with the campaign settings. So in that campaign settings, we have been discussed about what is a bidding strategy, what are the location based, audience segments, language settings. So next आपको यहाँ पे keywords. So यहाँ पे आपको by default से कई keywords को दिखाई दे रहा है. So वो keywords actually it is being selected from your website. So by default, the Google has found out what are the keywords it is available on your website. वहां पे आप देख सकते हैं. So in case आप जिन keywords के अलावा और कोई दूसरा keywords को आप ऐड करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं. But make sure that whatever the keywords you are going to select it over here, on that basis only you are going to create the content. The ad should be contained with the keywords, and your content of your websites also should be contained with that keywords. So be very careful when you are going to choose with the keywords. Okay, so जो लोग वहां पे keywords को नहीं दिया, आपका वेबसाइट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेंगे और यहाँ पे आपको keywords को ढूंढना पड़ेगा. Okay, so for that I can help you out. Which are the keywords can be trending और किस keywords
आप मोर प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी, ऐसा आप चेक करना चाहेंगे तो इसी गूगल एड्स में एक टूल है। रितेश सर, क्या आप वहां पे टूल्स एंड सेटिंग्स के नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है पूरा ऊपर? हाँ हाँ, क्लिक कीजिए वहां पे। ओके यहाँ पे पहले कॉलम में जो प्लानिंग का ऑप्शन है, ओके डोंट क्लिक ऑन कीवर्ड प्लानर, राइट क्लिक ऑन कीवर्ड प्लानर, राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन न्यू टैब, ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हम बना रहे हैं उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट द कीवर्ड्स। यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका आपका क्या कीवर्ड है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। And everyone knows that what is keyword. Keyword is a word which is going to be a link between the audience what they are searching for and the person who is marketing. So that word should be available in their internet or the web pages, whatever they have created on the internet. Okay, so get results पे क्लिक कीजिए। गेट रिजल्ट्स नीचे। ये वेबसाइट टाइप करने की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर राइट साइड पे जो रिफाइन कीवर्ड्स है उसको क्लोज कर दीजिए। So you can see that how many people are searching the keywords with your keywords what you have been specified. यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स के नाम से कितने लोग 100K, 100,000, 1 million, ओके, 1 लाख टू 10 लाख तक लोग ई कॉमर्स के वर्ड से सर्च कर रहा है on everyday basis. So if you are going to use it, so the competition is very less. Why? Because you have more people who are using the same word. आप वही वर्ड को यूज करेंगे तो आपका एड आपके टॉप में नहीं दिखाई देगा और आपका कंटेंट आपको टॉप से नहीं दिखाई देगा, बट इट इज हाई चार्जेस, 117 रुपीज तक आपको चार्ज लगेंगे हर एक कीवर्ड को। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बी एबल टू फाइंड इट आउट विच आर दोज वर्ड्स which are on trending. आप नीचे देख सकते हैं which are the other words which are on trending related to the same kind. Okay, so you can be able to try to prepare the list. Okay, so if you want you can be able to download it also. वहां पे ऑन टॉप राइट हैंड साइड पे वहां पे डाउनलोड का सिंबल है, उसको डाउनलोड करके गूगल शीट्स में या CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप इसको लाइक R&D की तरह आप यूज कर सकते हैं। विच वर्ड कैन बी हेल्पफुल टू यू दैट यू कैन बी एबल टू प्रिपेयर द कंटेंट बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट्स। Okay, this is one of the free keyword tool which has been provided by the Google. ठीक है सर? Okay. Yeah, so you have to work it. After the end of the session I'll be sending a document which can help you out to find out what could be the best way of choosing with the keywords. Okay, so just we will go back to our campaign. Yeah, click कीजिए वहां पे सर्च कैंपेन पे, पिछले वाला स्क्रीन just below before that. हाँ, जो click anywhere outside sir.
कहीं और जगह पे, हाँ, yes. So let's assume it these were the keywords which you feel it that it is yes the right keywords. Okay, so you can put it, scroll down कीजिए, यहाँ पे आप वहां पे फाइनल URL पे आप शुरू में https:// yeah, so now it is secured. आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है आपके वेबसाइट में ऑलरेडी, उस कंटेंट को लेके यहाँ पे ऑलरेडी आपको थोड़ा सा आपका डिटेल्स पहले से ही फिल किया हुआ है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू फॉलो विथ सर्टेन सजेशंस. यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर जो एड स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे एड स्ट्रेंथ ऊपर, हाँ, सो यस सर, सो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 60 to 70% आपको फिलअप होना चाहिए. सो नाउ द स्ट्रेंथ इज पुअर, यानी something is missing which is required. Okay, उसको फिलअप करने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे, उसके राइट हैंड साइड पे जो सजेशंस दिखा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए. सो यू हैव टू ऐड विद द हेडलाइंस. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हेडलाइंस दिखाई दे रहा है. Okay, so like this. पे क्लिक नहीं हो रहा है. हाँ सर, कीवर्ड्स पे क्लिक नहीं हो रहा है. नहीं, कुछ ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई दे, यानी आपको ऑप्शन को क्लिक करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है. सो विच इज लाइक अ प्लैगरिज्म काइंड. ये मेरे ख्याल से अभी सही है. Okay, so try to make it in a kind of a sentences पे लेके आइए. In particular headlines आप जो left hand side पे देख रहे हैं ना, so you can be able to bring it headlines in a particular sentences that could also will be helpful to you. और यहाँ पे characters आपको it is limitations है. हेडलाइंस आपको 30 कैरेक्टर्स लिमिटेशन है और डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स लिमिटेशन है. ठीक है, यस, यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन कीजिए, कम डाउन. सो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन. सो बाय डिफॉल्ट आपका जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसको लिया हुआ है. आप चाहे तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं. सो मिनिमम 3 to 4 डिस्क्रिप्शंस को ऐड करना चाहिए एंड मिनिमम 2 to 3 डिस्क्रिप्शंस को आप रखना चाहिए. ओके, सो जस्ट स्क्रॉल डाउन. यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए. नेक्स्ट. यस, सो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लिंक देने के लिए बता रहा है, यानी आप कोई पर्टिकुलर स्क्रीन को, आपके लैंडिंग पेज लिंक को आप हाईलाइट करना चाहेंगे, ऐसा रहेगा तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर लिंक और उसमें जो कुछ भी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहेंगे तो यहाँ पे साइट लिंक लिस्ट को और टेक्स्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, और आपको नहीं चाहिए तो
आप इसको भी आप नहीं दिया तो भी या ठीक है. So on the left hand side, call out extensions. थोड़ा नीचे आइए. नीचे नीचे नीचे. हाँ 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 सर, वो इंटरनेट. ओके ओके. सेव पे क्लिक कीजिए सर. या ठीक है, थोड़ा नीचे आइए. हाँ, the next one is call out extension. So call out extensions में आप यहाँ पे आप जो कुछ भी आपका हाईलाइटेड है कैटेगरीज, वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप. And it is again अच्छा, इसमें 18 ही लेने दे रहे हैं. 25 characters ही लास्ट है सर. ओके सेव. ये क्या काम करेगा सर, ये जो कॉल सर आप बाद में आप एड्स में देख लीजिए, ये पर्टिकुलर वर्ड्स क्लिकेबल रहेगा, यानी आपको डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे कनेक्ट करेगा ये. ओके. आप देख सकते हैं ऐसे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. या और कॉल एक्सटेंशंस आपके कांटेक्ट नंबर को हाईलाइट करके क्लिकेबल करना चाहिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं. ओके. सेव और मोर एक्सटेंशंस पे जाइए. यहाँ पे आप लीड फॉर्म एक्सटेंशंस पे जाइए. तो जो आपको आपके लीड फॉर्म्स को कनेक्ट करना चाहिए ना, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं सर. ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब फॉर्म का हेडलाइन क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस? बिजनेस नेम मतलब अपना कंपनी का नाम आएगा? हाँ हाँ सर. इतना ठीक है या फिर ज्यादा चाहिए डिस्क्रिप्शन? हाँ सर, हाँ हाँ इतना काफी है. सो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, ईमेल आईडी पे भी क्लिक कीजिए. वो ईमेल आईडी रहेगा तो इट विल बी गुड फॉर यू. डन है. आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे. हाँ दिख रहा है.
ये सारी डिटेल तो कोई नहीं भरेगा। हाँ, आपको जितना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। And so these details are mandatory or optional? Like it is up to your requirement now. No, क्या आपको if चाहिए? no, if audiences are filling this information, So so it for is, them, that's what it is, not recommended by the Google. So it is our requirement. I want these details from my audience. If you feel it, you can be able to select with that option. if audience skip any 1, 2, 3 option, then they will be able to skip the information which they don't want to share. Like you can try to keep it in very simple way, so that any audience, they are not going to feel it that, so it is something hectic and they will leave it in between. So what is that main thing which is going to attract, and we should be able to get it from them. Make sure with that. Don't give a very lengthier, and don't ask every history of that person. So which may not lead to you to get that audience interested. I guess it's enough. Yeah. So और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे इंग्लिश। अच्छा, ओके, फॉर्म का ऑप्शन है। हाँ, यस। So नीचे आइए। If you want, you can add the image also. हाँ, इमेज ऐड करना है। वो ऐड इमेज पे ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ, अपलोड पे जाइए। साइज चेंज करना पड़ेगा। उस साइज के हिसाब से आप क्रिएट करके रखा तो इट विल बी गुड सर, यू कैन सी दैट। यस, अभी छोड़ देते हैं। हाँ सर, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये बाद में ऐड कर पाएंगे ना? हाँ, कर सकते हैं सर। ठीक है। सो कॉल टू एक्शन बटन, और यहाँ पे आप वो फॉर्म आपका रहेगा ना, वो लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं आप। पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे, यहाँ पे नहीं, पूरा नीचे। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखिए विजिट साइट करके है ना, ओके, उसके नीचे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आप। सो कहाँ पे वो कनेक्ट करना चाहिए, आपका फॉर्म अलग सा हुआ या और कुछ रहेगा, वो लिंक पे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आइए। Yeah, click on save. Accept. अच्छा, ये कंप्लीट करने को बोल रहा है। लीड
form before setting up an integration. हाँ, यहाँ पे क्या करना है? सो कॉल टू एक्शन का डिस्क्रिप्शन, सो वही डिटेल्स दे दीजिए। कौन सा सर? यहाँ पे भी कुछ मांग रहा है आपका वेबसाइट का, हाँ वही दे दीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट लिख लीजिए, ज्वाइन नाउ। यहाँ पे जो कुछ किसके लिए वो ज्वाइन करना चाहिए, जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था ना, वो उसी को लिख लीजिए। ऑफ को निकाल दिया। ओके ओके, अभी सेव पे क्लिक कीजिए। ये आपके पहले पास सिलेक्ट करना Zapier? पड़ता है क्या? नहीं, Zapier आपका अकाउंट है क्या सर? नहीं 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 नहीं, वो गूगल शीट पे क्लिक कीजिए, दूसरा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। वही किया था मैंने। अच्छा, ये रन क्रिएट गूगल शीट रोज। हाँ, नहीं वो Zapier को ही कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको बंद कर लीजिए, डायरेक्टली सेव पे क्लिक कीजिए, देख लेंगे क्या। हाँ, हो तो गया लीड्स है। आएगी तो अभी कैसे पता चलेगा? आपके मेल आईडी पे लिंक हो जाएगा सर। नहीं नहीं, लीड्स कैसे आएगी? वो डाउनलोड करनी होगी तो? नहीं वही है, आपको जब भी कोई भी लीड्स आपको मिलेंगे, आपके मेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे इट हैज टेकन द एवरेज बजट, क्लोज कीजिए। यहाँ पे जो डॉलर का वो चेंज कर सकते हैं, वहां पे नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट वो रुपीस ही लिया हुआ है। नहीं डॉलर, अच्छा बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे रुपीस है, कस्टम बजट जो है उसमें डॉलर आ जाता है। हम्म, In the previous screen, there was option where we have to select the country, timings, and for currency campaign also. settings option. हाँ, maybe वहाँ पर currency setting में कुछ ये नहीं आता उसका, वो एक सेट का 35,000। हाँ, यहाँ पे आना रखट रिफ्रेश करो। चला तो नहीं जाएगा ना कुछ? अभी भी वही आ रहा है। कीवर्ड से मेरा कंप्लीट नहीं हुआ लग रहा है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे आप पूरा इसमें जाइए सर, कीवर्ड्स पे जाइए, कीवर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कीवर्ड्स की, हाँ हाँ वो पूरा निकाल दीजिए, वहां पे जो कुछ भी कीवर्ड्स है। नहीं, अभी एरर नहीं है उसमें। नहीं, एरर नहीं है, आप पूरा निकाल दीजिए। ओके, और यहाँ पे आप लिख के जाइए, आप
जो कुछ भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहिए वो कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लीजिए। तो यही सारे हैं सर, नहीं, इतने सारे क्या आप लिखने वही है, आप इतने सारे कीवर्ड्स आप लेंगे तो आपको चार्जेस ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। हाँ, आप पर्टिकुलरली कौन से कीवर्ड्स पे आप टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। इतना रखते हैं फिर देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए। क्योंकि वही आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखिए। हाँ, बजट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखिए। हाँ, या ये क्या हो गया? नेक्स्ट कीजिए। तो फाइनली आपने जो कुछ भी ऑप्शंस लिया हुआ है यहाँ पे एक बार रिव्यू करके देखिए। अच्छा, हाँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो पूरा ऊपर जाइए, तो कुछ फिक्सेड करके दिखा रहा था। Add extensions to boost campaign, fix it। क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करने को बोल रहे हैं। आपने पहले दिया हुआ था ना? हाँ, एक दिया है ना, एक या दो करने को सो बोल रहा है। एटलीस्ट 2 करके दिखा रहा है। आप 2 तरह का एक्सटेंशन दीजिए। अब दूसरा और एक एक्सटेंशन दीजिए। एक तो ऑलरेडी दिया है सर। और एक ट्रेनिंग के बारे में, नहीं, और एक साइट लिंक के एक्सटेंशन 2 ट्रेनिंग के बारे में एक दीजिए। हाँ, नहीं, आगे दिया हुआ है ना, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर वो वही दोबारा से दिखा दे रहा है तो एक को निकाल के एक को रख सकते हैं। हाँ, अभी सेव कर लीजिए। ठीक है, 3 करके दिखा दे रहा ना, लास्ट वन को कोई निकाल बात दिया नहीं। ना। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट। अभी भी वही आ रहा है। यहाँ पे कुछ डालने को बोल रहा है क्या? नहीं, थोड़ा ऊपर जाइए। ओके, सिलेक्ट किया हुआ है ना। अभी भी बोल रहा है कुछ और। एक मिनट, अब थोड़ा ऊपर जाइए। यहाँ पे 3 एक्सटेंशंस करके दिखाई दे रहा है ना, वो ट्रेनिंग के ऊपर। दो ना, नहीं, दो सिलेक्टेड है ना, ये रहा ना दो। हाँ, नहीं वो ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। एक सेकंड, शायद हो गया। हाँ,
अभी हो गया। वो मोबाइल नंबर वाला सिलेक्ट करना बाकी था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दोबारा से एक कंफर्म करके आप रन कीजिए। ये हो गया रन। हाँ ठीक है, अभी वो एड एक्टिवेट हो गया है, तो वो थोड़ा वेरीफाई होके आपने वो अकाउंट का डिटेल्स आपने दिया हुआ है, तो वो ऐड शुरू हो जाएगा सर। Sir, likewise, हाँ मैम, he has put the amount 500. So if it is out of the budget according to the system, so the campaign will not be run. no, it will give you an error message there itself ma'am. जो बिटिंग का वैल्यू है उसके कम आप दिया हुआ है, तो it will not take it. Because 15,000 से 500 acceptable हो गया एकदम इसमें। अब वही है, वो particularly less than 500 ही accept होता है। You would have given less than 500, it would have not allowed him to go ahead with the further process itself. Okay. Okay, is that everyone are clear with this? How did we create with this type of ad? So similarly, you can try it out with the other type of ad also. So in the next class, we are going to discuss about how to create an YouTube account and how you can be able to create an YouTube ads. सर इसमें एक एरर है, क्या आ रहा है सर? ये पेमेंट थ्रू नहीं हुआ है, पेमेंट मेथड चेक करने को बोल रहा है। यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाइए, सेटअप बिलिंग यहीं पे है, देखिए कहाँ पर? यहाँ पे बिलिंग, यहाँ पर राइट साइड पे Yes, लास्ट, yes, yes. हाँ सेटिंग्स पे जाइए। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ सर। हाँ सर, डन सर, थैंक यू सो मच सर। It will be displayed on Google search engine. yeah, like it is Can we your see? personal, no, like ad शुरू होने के बाद में देख सकते हैं, Okay. but So it will like take some time, it will take some time to verify the details and then it is going to start. and with the given keywords which he has entered. Yes. Okay. Fine. So just everyone try with this features. So in case if you find any difficulty, we can be able to discuss it in the next session. Okay, sir. Sure, sir. Okay. Thank you so much. Sir. Yes, welcome, sir. So hope everyone had a live demo of creation of an ad. So please follow it with the video once again. If you are in case of any kind of a doubt, let us know. Thank you all. Have a nice time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.